अस्सलाम वालेकुम। Open your cameras. All of you, open your cameras. How are you all? Amna, Tapesh, Abdul Bari, Fariha. Open your camera, beta. अपना कैमरा खोलिए। Okay, who's this? Okay, बेटे फातिमा, आप अपने नेम से ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो? आपने ये किसके नेम से ज्वाइन किया है क्लास? Okay, Amna, Tapesh, Abdul Bari, Fariha, बेटे please open your cameras. फरीहा, अब कैमरा क्लोज नहीं होना चाहिए। What happened to your finger, फरीहा? Unmute yourself. क्या हुआ बेटे? Unmute yourself, बेटा. What happened to your finger? टीचर मैं गिर गई थी तो लग गई थी। Where did you fell? उंगली पे। कहाँ गिर गए थे बेटे आप? टीचर मैंने I can't hear you. Okay. Okay, take care of yourself. Okay, बेटा take care of. ज़ूम में मेरी उंगली हल्की। Okay, okay. Okay, take care of yourself. जी माँ अरहम बोलिए। माहम बोलो बेटा। माहम join the class with your name. अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम. Change your name, Maham. ओके मिस। Okay, so let's not waste time and move to first of all, we are supposed to do the recitation as we every day start our class with the name of Almighty Allah. So the recitation today will be done by Ayan Abbas. Ayan Abbas, unmute yourself. Ayan Abbas, unmute yourself and start the recitation. Ayan Abbas, unmute yourself. All of you cover your heads. The girls. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद सदाकल्लाहुल अज़ीम। Jazakallah Ayan Abbas for the recitation. Okay, so let's not waste time and move towards our studies as well. And so I want all of you to bring your GK book. I hope you are having it. The GK book and your GK copy. Hurry up. All of you. Hurry up, hurry up, hurry up. And show it to me on the screen. Show it to me on the camera. Abdul Bari and Fariha, open your camera. Okay, Fatma, very good. Very good, Fatma. Keep your school copy with you as well, in which you have written the note. Okay, Abraham, very good. Okay, Hassan, you're showing me the copy. Do you have the book? Okay, very good. Okay, excellent, Hassan. I hope you all have written the note on Pakistan that I gave you in the homework previous. Okay, Zainab, I can see your book and copy. Excellent. What about the rest of the students? Amna, Ayan, Abbas, Malahim. Yes, Malahim, unmute yourself. Bolo bete. Okay, मेरे पास बुक नहीं है, कॉपी है। Okay, you don't have the book, but you have the copy. Okay, आपने note लिख लिया है बेटा? Have you written the note? Okay, very good. Okay, no problem. Okay, आपके पास copy book
book nahi hai, it's absolutely fine, no problem. Okay, so as I gave you a homework earlier that you are supposed to read the chapter Pakistan. Am I right? I asked you to do that in the previous class. On page number, I even told you the page number, just give me a second. Okay, yeah, I told you the page number, that is page number 24, right? Yeah, yes, Hassan, excellent. So I asked you to read this chapter, Pakistan. It is giving you information about the Pakistan, okay? And okay, so let's not waste time. Those, I hope all of you, those who are in the class right now, just send me a thumbs up. Those who have written the note, जिसने सबने note लिख लिया है in the class, जो अभी सब हैं, kindly send me a thumbs up through Zoom. Okay, Hassan, Malaham, Abraham, you have written. Zainab has written. Ahmed Abish has also written. What about the others? The rest of the students? जी मनाहिल, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, बोलिए। मिस जी मिस आपने कौन सा पेज नंबर बोला है? तो बोले एटलीस्ट प्रोजेक्ट 24, ठीक है, थैंक यू मिस। जी फरीहा, अनम्यूट योरसेल्फ, बोलो बेटा। टीचर, आई हैव द बुक बट आई डोंट फाउंड। On page number 24. टीचर, कैन यू शेयर स्क्रीन? Bete, I do not have the picture, but I can show it to you like this. If you can see it, it's page number 24. Okay, it's page number 24. Okay. Okay, so okay, those who have read this chapter, can anyone of you explain it? Can anyone of you explain it? Then what did you read it? What did you read about? Yes, Abraham, unmute yourself. Abraham, थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद हसन बताएंगे हमें. जी Abraham, what did you read about? What is the book saying about Pakistan? जी बेटा बोलो. The book is telling about us what is Pakistan and what is Pakistan made up of. Pakistan is a country in Asia. Pakistan is made up of 4 provinces: Punjab, Sindh, Punjab, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa. Formerly North West Frontier Province and the Federal Administrative Territory, FATA. Federal Okay, and administrative. Okay, thank you, Abraham. Okay, so they are in the book that they are telling us that Pakistan is a country and it lies in which continent? In Asia. We learned this in the previous videos as well, right? I explained it to you that the country Pakistan lies in a continent Asia, right? And then it is made the whole Pakistan is made up is divided into 4 parts, like 4 provinces. उसके 4 provinces हैं, ठीक है? 4 सूबों में उसको डिवाइड कर दिया है, मतलब 4 सूबे कर दिए हैं उसके 4 provinces बना के. And what are the names of those provinces? Sindh, Punjab, Balochistan, and Khyber Pakhtunkhwa. These are the 4 provinces. Is it clear to everyone? Okay, so the rest of the part, Hassan, explain it to us that what did you read about it? That what is the capital city of, आप यहाँ से read करिए. Yes, beta. Pakistan's capital city is Islamabad. Excellent. There are more than 170 million people in Pakistan. Many people live in villages. The biggest city is Karachi, which is located near the sea. Okay, excellent. So yes, the capital city, the capital of Pakistan, the capital of Pakistan is Islamabad. Okay, and where is Islamabad located? It is located in Punjab. Okay, and the biggest city in Pakistan, जो पूरे पाकिस्तान में जो biggest city है, it is Karachi, where we are living right now. ठीक है, our city is the biggest city of Pakistan.
Karachi. That means it's Karachi. It is located near the seaport. ठीक है, वो जो it is located near the sea. जैसे जो समंदरी इलाका है, it is located near to the sea. Is it clear up till now? Give me a thumbs up. Okay, so now what I want all of you to do is what you have, आप लोगों ने क्या किया होगा, you all wrote that note on Pakistan, right? सबने लिखा है वो, ठीक है. Now on the next page, open your copies. पहले तो सब अपना वो खोल लें जिस जहाँ आप लोगों ने नोट लिखा हुआ है, जहाँ पे आपने पाकिस्तान के बारे में नोट लिखा था ना, just open that note and grab a pencil in your hand. I'm asking you to write it down with me. साथ साथ लिखते जाएंगे. Abdullah, open your GK copy. Abraham, open your camera, bete, and open your GK copy. Ji Abdul Bari, don't look at me, bete. Open your copy. Start doing the work. Where are your copies? तो कॉपीज तो आगे मिस, मेरे पास जीके की शायद कॉपी नहीं आई. बेटे कब आएगी? मिस मेरी तो बहुत पहले आई थी कॉपी ये वाली, तो उसमें शायद ना जीके की नहीं थी. मैंने सारे नाम भी लिख लिए तो जीके की नहीं मिली. बेटे ऐसे कैसे हो सकता है? Take it as soon as possible because क्या नाम है, you people will be having exams, तो हमें काम करना है ना. कैसे पढ़ेंगे फिर आप? ठीक है. Okay, so जी Ayan Abbas, unmute yourself. बोलो बेटा. Unmute yourself, Ayan Abbas. जी. मिस मेरी कॉपी सभी आज ही आई है. आप मुझे बता दें कितने बजे छोड़ के करना है काम. बेटे मैं एक मिनट. हसन, you have completed your work. आपका काम पूरा complete है till the note. Can you count the pages and tell Ayan Abbas that how many pages are there, how many pages he should leave. बताइए बेटे. Count it by yourself. It's no need to show it. Just count it by yourself. Miss 7. No, not 7. Miss 4 pages. Okay. I say thank you to Mama. Ayan Abbas, leave 4 pages. Ayan Abbas, leave 4 pages. Leave 4 pages. हसन वफा के ग्रुप में शेयर कर देना. बेटे Ayan Abbas, I'm asking you to leave 4 pages. मिस इंटर लीफ कॉपी हो गया, बगैर इंटर लीफ कॉपी. Without interleave. ओके. Okay, just give me a second. Open that page and I'm telling you what to do. Okay, so after the अच्छा सबसे पहले okay, तो सबसे पहले you must have written the fall term title page. ठीक है, तो सबसे पहले आपका fall term title page है. After that title page you have the syllabus of fall term, right? मैं आपको screen share करती हूँ and I'll show it to you. I have the way we did the work. Just give me a second. Okay, so can you all see the screen? Give me a thumbs up if you all can see the screen. Ayan Abbas, समझ लीजिए और अब take help from Mama and ask her to write it on the pages. मैं pages बताती जा रही हूँ, वो लिखते जाइए. Okay, so I asked everyone to make up. This is your GK copy, right? ये आपकी GK की copy है, ठीक है?
लीव दिस फर्स्ट पेज, ये फर्स्ट पेज को लीव कर दें, ठीक है अयान अब्बास, और एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दोज़ हु हैवंट डन एनीथिंग, लिसन टू इट वेरी केयरफुली, लीव दिस फर्स्ट पेज, ठीक है. On this second page, make a fall term title page, just a fall term title page, ठीक है. After the fall term title page, write fall term syllabus over here, ठीक है. After writing the fall term syllabus, if you want to make a title page of information about Pakistan, you can make it, or you don't want to make it, so you are supposed to do question number 1. This is a question, write down a short note. You are supposed to write a short note on this page and give a heading of the chapter, information about Pakistan, at the top, ठीक है. If you don't want to make a title page, and if you are making a title page, just start your work from here, and no need to write it on the top that it's information about Pakistan. Just write down the question, ठीक है. Is it clear up till now? We need to do the question answers. Hurry up. Is it clear up till now? Yes, Fariha, unmute yourself. Bete, why are you raising your hand? Bolo beta. Fariha, unmute yourself. मेरी बुक जो है ना वो अभी ना घूम गई है, तो टीचर मैं अगले दिन बाय कर लूंगी. Okay, okay. मुझे काम complete चाहिए बेटे. I want your work complete. Okay, so yes, Talbiha, unmute yourself. बोलो बेटा क्या हुआ? जी Talbiha, unmute yourself. टीचर मेरे भाई ने कॉपी ला दी है, मैं होमवर्क कर लूं जो आपने बताया है. बेटे अब क्लास खत्म होने के बाद कीजिएगा. ओके जी अब्दुल्ला, unmute yourself. बोलो बेटा. मिस मैंने शॉर्ट नोट तो लिख लिया, अब उसके आगे क्या काम करना है? अभी बता रही हूँ अभी क्या करना है, बता रही हूँ. ओके, मलाहिम, unmute yourself. बेटे बोलो. Unmute yourself, Malahim. Hurry up. टीचर वो मुझे 4 पेजेस नहीं छोड़ने. कौन से पेजेस? 4 पेजेस. बेटे आपको नहीं छोड़ने. जिन बच्चों ने काम नहीं किया है, जिन्होंने कॉपीज आज बाय की हैं, मैंने उनके लिए बताया था कि वो 4 पेजेस छोड़ के काम स्टार्ट करें, जो मैं अभी करा रही हूँ, ठीक है. यू डोंट नीड टू लीव 4 पेजेस इफ यू हैव रिटन योर शॉर्ट नोट एंड ऑल. जी अयान अशरफ, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. वेट अयान अब्बास, आई विल अनम्यूट यू आफ्टर अयान अशरफ. जी अयान, जी बेटे आ रही है, बोलिए. मिस यहाँ पे एक सिलेबस. ओके, आई कांट हियर यू अयान अशरफ. आई कांट हियर यू बेटे, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. अब आ रही थी, फिर चले गई. हेलो, जी आ रही है. आवाज आ रही है? जी आ रही है बेटे. बोलो. हेलो, जी बेटे बोलो. यहाँ पे एक सिलेबस. क्या कह रहे हो? बेटे हरी आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है. राइट इट इन द चैट बॉक्स. अयान अशरफ, राइट इट इन द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में लिखो. जी अयान अब्बास, यू वांटेड टू से समथिंग. अनम्यूट योरसेल्फ अयान अब्बास. अयान अब्बास बोलो बेटा. नोट खुद से लिखना है. सॉरी जी, नोट खुद से लिखना है. नोट खुद लिखना है. I made an explanation about it in the previous class, and then I asked everyone to write it down. So you can watch that video, or you can just read the book and then write it down, write a short note on it. Okay,
Everyone wrote it by themselves. Okay, so after writing this note, what you are supposed to do is, आपने नोट लिख लिया. नोट लिखने के on the next page, नोट लिखने के बाद वाले पेज पे, on the next page, you have to draw this map which is in the book on page number 25. You are supposed to draw the map which is on page number 25. Can you see it? Draw the map after the short note on page number 25. You are supposed to draw this map in your copy after the short note. ठीक है? What you are अब आप क्या करोगे? After short note ना आप next page पे उसके map लिख दो. सिर्फ MAP map लिखो और उसके next page पे date डालो. We'll start doing our question answers. We'll start doing our question answers. Hurry up. Pencil से MAP लिख लें at the top on the red line, MAP map, ठीक है? And then मैं आपको यूनिवर्सिटी पे होमवर्क भी डाल दूंगी that you are supposed to draw a map from page number 25. And then on the next page, write today's date and we'll be doing question answers. On the next page, write question. जी मलाहिम अनम्यूट करो बेटे. Why are you raising your hand? क्या हुआ? बोलो बेटा. जहाँ मैप लिखा है वहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखने के इसके बाद On वाले. the next page. मैप के next page पे question answers लिखने हैं. Next page पे. On the next page, not on the same page. मैप तो draw करना है आपको. जी अब्दुल्ला unmute yourself बेटा बोलो. जो मैंने शॉर्ट नोट लिखा है उसके बाद मैप लिखना है. उसके नेक्स्ट पेज पे ना आप मैप की हेडिंग डाल दो और आपको पेज नंबर 25 से पाकिस्तान का मैप देख के ड्रॉ करना है. उसके नेक्स्ट पेज पे हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं. मिस आई डोंट हैव बुक. आई शेयर द पिक्चर ऑन यूनिवर्सिटी. मैं पिक्चर शेयर कर दूंगी यूनिवर्सिटी पे. ओके ओके मिस. अब अनम्यूट करो फिर से. जी बोलो. ये कह रहा था वो कोई पेज छोड़ना है. नहीं पेज नहीं छोड़ना है. आपने शॉर्ट नोट लिखा उसके बाद आपने मैप की हेडिंग डाली क्योंकि मैप ड्रॉ होगा वहां पे. उसके नेक्स्ट पेज पे आप डेट डालो और क्वेश्चन आंसर्स लिख लो. ठीक है? फर्स्ट 4 लाइंस पे. ओके कोई पेज नहीं लीव करना. जी फरीहा अनम्यूट करो बेटे. बोलो क्या हुआ. टीचर आई वांट टू आस्क टीचर कि हम आप ना अभी अपलोड कर देंगे यूनिवर्सिटी पे. जी मैं अभी मेरे अपलोड. पास अभी बुक नहीं मिली. मैं पिक्चर अपलोड कर दूंगी. डोंट वरी. ठीक है? ओके मिस. जी माहम अनम्यूट योरसेल्फ. बोलो बेटा. मिस मैप कहाँ ड्रॉ करना है. बेटे शॉर्ट नोट के नेक्स्ट पेज पे आपको मैप ड्रॉ करना है. ठीक है? आप MAP लिखो रेड लाइन पे और उस पेज को लीव कर दो, छोड़ दो. मैं आपको जो पिक्चर यूनिवर्सिटी पे प्रोवाइड करूंगी ना आपको वो मैप अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है. ठीक है? उसके नेक्स्ट पेज पे राइट डाउन क्वेश्चन आंसर्स जो हम अभी कर रहे हैं. आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना, वो लिखना है. राइट डाउन. Okay, so your question number 1 is, just give me a second. Founder. Okay, so who's going to give the answer for this question? Who is the founder of Pakistan?
Write it in the chat box. In the chat box. Don't start raising your hands. Chat box में लिखो. Okay, very good, Ayan Abbas. Very good, Hassan. Okay, Abdul Bari, very good. Okay, so yes, the founder. This is the answer. Question 2 is, okay, so on which day do we celebrate Independence Day? Okay, very good. Those who have given the answer, San, Zainab, Ayana Past, Malahim, very good. We celebrate Independence Day on 14th of August. We rate okay. Question 3.
Okay, question number 3 is who wrote the national national anthem of Pakistan? Who wrote the national anthem of Pakistan? Abdul Bari. Yes, Hassan, you have given the correct answer. बेटे मैं नेशनल एंथम का नाम नहीं पूछ रही हूँ, किसने लिखा है नेशनल एंथम. The national anthem was written by Hafiz Jalandhari. Those who have done question number 1, completed question 1 and answer, its answer, give me a thumbs up so that I can scroll my screen. Okay, so Miss Sidra is here and we'll be continuing our work tomorrow. Just complete these questions till the question 3. And Miss Sidra, you need to start the new class because it's less than a minute in my class. Yeah, sure. You can all of you can take the screenshot or a picture of this and complete your work. I'm leaving the class. You join when you leave the you end the meeting. So let me know. Okay, I'll start it again. Okay. Take a picture of this. Hurry up because it's less than a minute. So yes, class end हो जाएगी आपकी. Hurry up. Take a picture.